Ladies and gentlemen, good day and welcome to the APL Apollo Tubes Ltd. Q4 FY22 results conference call hosted by Ambit Capital Private Limited. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star and 0 on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Dhruv Jain from Ambit Capital Private Limited. Thank you and over to you, sir. Thank you. Hello everyone. Welcome to APL Apollo's 4Q FY22 earnings call. From the management side, today we have with us Mr. Sanjay Gupta, Chairman and Managing Director, Mr. Deepak Goyal, the Chief Financial Officer, Mr. Arun Agarwal, Chief Operating Officer, and Mr. Anubhav Gupta, the Chief Strategy Officer. Thank you and over to you, sir, for your opening remarks. Thanks. Hi, Dhruv. Thank you so much for hosting us. Good afternoon, everyone. This is Anubhav Gupta. Thanks for dropping by. And I welcome everyone on behalf of APL Apollo Management to our FY22 earnings call. FY22 has been a very eventful year. When we started the financial year, there was a second wave of corona which hit the nation badly. And by the time we closed the year, there was a Russia-Ukraine war, which also kind of impacted the year in a big way. But I'm very glad to share that we have ended FY22 on a very high note. And we were able to make a perfect pyramid with the sales volume growth of 7%, EBITDA rising by 39%, and PAT rising by 55%. The volumes were soft in the first 9 months, but we picked up very strongly in the Q4 with 27% YOY growth and closed FY22 with the highest ever volume of 1.75 million tons. Our EBITDA per ton improved to 5,400 rupees from 4,200 per ton. This was driven by value addition, brand premium, and market pull, which we saw in the first half of FY22. And now we are confident that our margins going forward should be in range of 4,500 to 5,500 rupees per ton. Our value-added sales mix improved to 63% from 57%. We saw very good growth in our coated tubes and heavy structural tubes. This has been our thesis for last 3-4 years, where we have invested a lot of energy, time, and money on value addition, and now we are seeing the benefits with the margin in form of margin improvement and improving sales mix. And going forward, our focus to invest more into value-added products remain on a high note, and we'll talk about it as we talk about our outlook over the next 2-3 years. The balance sheet got further strong with cash flow generation of 6.5 billion rupees. So our operating cash flow to EBITDA was 70%. This is quite good when we see that the steel prices increased by 45%. So our company absorbed this increase in steel prices easily without stretching our balance sheet and cash flows. And this operating cash flow of 6.5 billion rupees helped us to fund capex in Raipur and some brownfield expansion, which made our full year capex of 6 billion rupees. And there was also investment of 750 million rupees in one of our distributors. The net working capital days remained 7, which is again best in the industry. We could sustain the working capital days at single digit. So our inventory management, our data collection, everything remains good and on track. The way we are guiding that our overall working capital cycle will remain in single digits. Our ROC improved to 34% from 26%. This shows the inherited strength of our business, the investments, the asset turnover, rising margin,
and the low working capital that has resulted in high ROC of 34%. And now our endeavor is to sustain this ROC and improve it further once the Raipur plant kicks in and starts contributing in a big way. At the same time, our ROE also touched 29%. So as we sweat more assets, our ROE will also go beyond 30% going forward. So these were the main highlights for FY22. Apart from that, there are some updates which we like to talk. One is the Shankara investment which we did into one of our largest distributors in month of March. So the rationale here was very simple, that we wanted to make our largest distributor to sell more of our products, because we see there is a lot of scope to increase APL sales volume onto Shankara's network and channel, and this will lead to security in sales volume going forward for APL Apollo. And given that South is our largest market, it made a lot of sense for us. Then it would provide a ready platform to launch our upcoming value-added products, which are mainly from Raipur. So that also jointly Shankara and APL Apollo will create the market for those new products and push through Shankara's existing network. Third benefit is that we are getting is the better pricing policy in South market over other markets, because our volumes are already secured by the largest distributor. So it is helping us to improve the pricing into that market. So we will see the overall positive impact on our earnings as well, on our EBITDA margins. As we are talking on Shankara, two things I like to make very clear is that we don't want to invest any more money in Shankara, right? So this is all what we wanted to do below 10%, and with that we are achieving all the objectives which we had in our mind before getting into this deal. And secondly, there is no plan of APL Apollo to run Shankara or run any retail business kind of setup. Our core business is manufacturing and distribution. This is what we are sticking to. And we expect this investment of 1.8 billion, out of which 750 million worth of shares have been bought from the promoters, and rest 1.1 billion will be infused in Shankara over the next 18 months through warrant conversion. So we expect this investment to be ROC accretive and EPS accretive from year one itself. And we are already seeing results. What we can tell you is that results are already visible after the deal was closed. Now coming to the second update is our 11th plant, Raipur, which is in our 100% subsidiary Apollo Build Products Limited. So that plant is also very important for the group because it's the largest facility with 1.5 million tons. In Q4, we have already started the production with small 400 tons of dispatch, but week on week that dispatch is rising, and we are very confident that 3Q onwards we will see significant contribution from Raipur kicking in. It's a mega plant with almost 8 to 9 billion INR of investments. We have spent 60% of it, and 40% will be done, which is equivalent to 3 billion INR that will be spent during this financial year. The third update is on Tricord merger. So all the necessary processes have been completed there. We expect the NCLT, the final court, to formalize the decision within this month. So hopefully, when we meet next time over the investor call, we would come with a single entity merge entity. Fourth update is on Alishan app. I'm glad to share that we as our endeavor to reach near to the end consumer, we launched Alishan app in month of February, and the idea is that we promote the end application of steel tubes closer to the end customer,
And so far we have got 45,000 downloads from end consumers, and we have enrolled 25,000 fabricators from 110 cities. So idea is to create a network of fabricators who are actual influencers in our product, so that ultimately they become the promoters of APL Apollo brand in front of the customer. This will help us improve our brand equity and also help us get more premium as we move forward. Fifth is the update on Delhi hospital projects, which were started last year. So you could see some of the photographs in the presentation that the work at all the 6 sites which the contractor has got possession. It's on track, and within 3 to 4 months, this kind of superstructures of up to 500,000 square foot of area has been erected. This is one of the fastest delivering projects in the country today, and we have a very strong pipeline which is building in around 30-40 projects. There are a lot of inquiries. We are doing a lot of design changes in various projects. So our thesis to build market for heavy structural tubes is also going well, and once these projects are fully completed, this will help us create more market for our heavy structural tubes. Apart from this, lastly, I'd like to touch base on our business strategy, which is revolving around 4 points. One is the continuous capex for value addition. Number 2 is the distribution enhancement through investment into Shankara for the southern market, and some starting of the secondary sales for some of the northern states what we have started as pilot project. Third is innovation, where we continue to invest our resources into new innovative products into structural steel tubes, which are launched in India. They are not for the first time being launched in India, but also globally. And fourth, continuous efforts on the market creation, because that's how we have grown at the CAGR of 19-20% over the last 10 years, and given that we have a target of reaching 4 million ton of sales volume by FY25, so we believe that these strategies will help us smoothen our journey, and we will be able to outperform expectations as we could do in FY22. That's it from our side. Dhruv, we can start the Q&A. Thank you so much. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, we will now begin the question and answer session. Participants who wish to ask a question may kindly press star 1 on your touchtone telephone. If you wish to withdraw yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. We have the first question from the line of Sujit Jain from ASK Investment Managers. Kindly proceed. Yeah, Sanjay Jain team, our compliments on a good set of numbers. I'm on slide 36. If you can elaborate a little more on the 2 new plants in Kolkata and Dubai, and as well as the galvanized lines to improve efficiency, where you mentioned it may reduce zinc consumption by rupees 4 per steel tube ton. What kind of margin improvement that can bring in, and also some bit on the Hyderabad Hosur backward integration value addition that you plan to do. Yeah, Sujit, thank you very much. Sujit, if you see our number, I think they have described anywhere or not, plant by plant. Our 2-3 plants are in the low margin category. Like one of the plant is Hyderabad and Hosur, and little bit Secunderabad plant. Their margins are low, and my other plants margins are high. हमारे एडमिशन से ठीक है,
तो यहाँ पर we are just going for some backward, not a capacity enhancement, some little bit investment for the value-added product, backward integration. उससे भी थिंक कि जो हसूर प्लांट हमारा ऑलमोस्ट 4 लाख टन कैपेसिटी का है, हैदराबाद ऑलमोस्ट 2 लाख टन कैपेसिटी का है, 8 लाख टन कैपेसिटी पे हम 1000 रुपीज से अपना EBITDA मार्जिन हम यहाँ पर बढ़ा पाएंगे. और जब ये न्यू प्लांट इन दुबई एंड कोलकाता, हमारा अभी जो भी हमने अपना पिछले 2 साल में सारा बिजनेस को रिलाइनमेंट किया है फ्रेट कॉस्ट को कम करने के लिए, तो वी सी कि हमारा यहाँ पर कुछ लाइन सब खाली हो गया है जो ज्यादा फुली कैपेसिटी पर नहीं यूटिलाइज हो पा रहा है. और ईस्ट में रायपुर से पूरा अंदर तक घुस नहीं पा रहे हैं. एंड ये प्लस तो एक्सपोर्ट का हमारा बहुत सारा मार्केट छूटा हुआ है, जिस हिसाब से ऑल प्राइसेस आर इन द अपर साइड फ्रॉम लास्ट 2-3 मंथ्स. तो हमको लगता है मिडिल ईस्ट में भी आगे अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा और मशीन हमारे पे आइडियल पड़ी. तो वी जस्ट वांट टू क्रिएट ए इंफ्रास्ट्रक्चर इन द बोथ ऑफ द प्लेस एंड थोड़ा सा अपना प्रेजेंस धीरे धीरे वहां बनाना चाहते हैं. और फ्यूचर में जैसे जैसे हमको वहां पर अपॉर्चुनिटी नजर आएगा तो फिर उसको और बढ़ा करेंगे. Right. Sure. Thank you. Thank you. Thank you. We have the question from Mr. Bharat Shah from ASK Investment Managers right now. Sir, kindly proceed. Sanjay ji, congratulations once again. Pretty remarkable performance of the business. On the which is the specialty plant, where we have 3 plants, all of 3 500,000 plant categories. Want to understand from you your sense of likely outcomes from that plant over a period of time, in terms of product portfolio, in terms of likely specialty areas which are distinguishing, and in turn the impact on the realization as well as the margins over a period of time. Hi, Bharat bhai, Anubhav here. So if you see the Raipur plant, it has 3 main product categories. Okay, one is the color-coated products, second is the color-coated tubes, and third is the heavy structural tubes up to size of 500 and 500 square diameter. So coming to the product category 1, which is color-coated products, that is an established market where a lot of companies are selling this product, but they make margins of up to 15 to 20%. APL Apollo is already supplying tubes for adjacent products. So color coated products become our adjacent product, which we can sell in the same channel under the same brand, and the end fabricator, the end user will be able to buy our products jointly. So we will be able into a solution category with color-coated products and tubes put together. And for that, we need not spend much into distribution infrastructure because all the existing distributors of Apollo deal into this product. And given that the industry is working on high 15-20% EBITDA margin, so even for us also it is very much possible, given the Apollo branding, that we will be able to achieve these kind of margins. Number 2 and number 3 products are highly innovative products like color-coated tubes. We have shown a photograph in our presentation also. You can see that this square tube or rectangular tube, these products have not been introduced globally. Globally, there are color-coated tubes, but those are mainly circular. Okay, and the application has been mainly like chemical transportation or gas transportation. But we converted that into the square rectangular tube, which is having a load bearing capability, and again it will replace the conventional products like wood and aluminium. Okay, in a big way,
and it can be used inside homes for various decor applications. And at the same time, it can be used in industrial sheds under pre-engineered buildings where the fabricators or contractors, they don't have the beautified products. Right now, they may be using either plain steel or maybe galvanized steel, right? So a lot of thought process innovation has gone into this category to make this product possible. And now the efforts have already begun from our team to create the market, both at the trade level and at the OEM level. And again, these products can carry very high margin because of two reasons. One, it is a highly specialized value-added product, so by default they carry better margin. And second, because this kind of products are not available anywhere globally, so and if we are able to make the market successfully, we can charge a very high premium for that. Third product is a heavy structural tube with size of 500 square diameter. So this is extension of our existing portfolio into heavy structural tube category. Almost 4 years ago, 5 years ago, we were the first one in India to put up 300 square diameter tube. At that point of time, the market was not existent. It took us 2 to 3 years to educate the construction industry that these kind of sections are available. And now our mills are running at high capacity utilization. After we got these Delhi hospital projects, there has been a good demonstration that with help of structural steel tubes, one can finish the buildings quickly and at lower cost. So we are getting a lot of inquiries for high-rise buildings up to 15, 20, 30 floors, and even for larger span industrial sheds, warehouses. So for those products, we have to get into heavy structural tubes with size up to 500 square diameter. You can look at the margin what we are making in 300 square diameter, which is given in our presentation in the range of 7,000 rupees per ton. And this 500 square diameter, globally only 3-4 companies produce that. Okay, so with introduction of these tubes, our margins should be more than what we are making on existing portfolio. So put together, all these three products have the potential of earning much more than what is being made today by Apollo, right? The whole objective is to create market and ramp up the production. Our team is working 24/7 to do both jobs. And in terms of the overall return profile, if you see, I mean, we have been able to improve our ROC from 26% to 34%, and in that almost 500-600 crore of 5 to 6 billion INR of capex has been done into Raipur, which has not yielded even $1 in FY22. So as the plant ramps up, we are very hopeful that and confident that our return profile would improve significantly from what we could do in FY22. And can you talk about color-coated products in greater detail, the kind of products and what kind of possibilities exist? So color-coated products, there are three main categories. Okay, so one is color-coated tubes. Second is color-coated door frame. Okay, because for that you need some adjustment in the width of the sheets. What we have been able to achieve, unlike anyone else. And third is for roofings. Roofings, it can be used at both locations, at homes and industrials, right? So idea is that right now the market for overall color coated products is very small because normally they are being only used in roofing. So we have innovated sizes and products which will expand the market beyond roofing. Roofing is the existing market, but we have made products for markets like door frames,
for roofing in industrial sheds, which is called purlins, for solar, for bus bodies, for shutters, for ductings. We can send you some of our presentations, Bharat Bhai, or you could go on our website also. You will see that how these products will be able to create markets into different categories, not only in one, but in at least 20. We are moving on to the next question. From the line of Mr. Rahul Agarwal from InCred Capital. Yeah, hi, good evening, and thanks for the opportunity. Congratulations on the performance, and good to see the increase in dividend payouts. Sir, first question was on the market creation. Anubhav mentioned it in the previous answer. But just wanted to understand more color, if you could help me understand the go-to market for the APL Raipur products. You explained the products, but what is really happening to get this 5 lakh ton volume go through this year? Could you help me understand that, please? That's the first question. So Rahul, again, for the benefit of everyone, so this year our target from Raipur is up to 300 to 400,000 ton of production and sales, right? And this will be mainly into the color-coated tubes. This segment has around capacity of 500,000 ton. And this is what we have started in month of March. You could see some dispatch also. So color-coated tubes will be used at 3 main areas, okay, and this will be bulk of it. Apart from that, we will be working on a lot of other applications in other markets. So number one is the purlins, which are used in the pre-engineered building structures. Okay, today if you see any warehouse or any industrial shed which has come up in the country, they use non-colored coated products. They use either galvanized or non-galvanized products. Okay, so this product lacks the beauty of the shed from inside. Okay, our products, our color-coated tubes can be used in place of purlins, and they can replace the existing products. And how it will help the customer is by increasing the life. Because our color-coated tubes, first they are galvanized, then they have aluminum coating, and then they have the color coating. So the life of the product will increase by at least 15 years, right? And at a cost of what? Maybe 10% or maybe 15%. So this becomes very strong value proposition for any fabricator or for any end consumer to switch to color-coated products, instead of simple galvanized products or plain products. Second volume uptick will come from the heavy structural tubes. As you can see, the ramp up, the sales growth in our heavy structural tubes in last 4 or 5 quarters. Okay, it is a function of our aggressive marketing and aggressive market creation strategy to increase the volume in this category. We are today sitting on a very solid pipeline of projects where this heavy structural tube section need to be used. Right, so we are waiting for this line to start in July, August, and once it is there, we have ready demand from our distributors and from the construction companies who will be happy to use these products on immediate basis. And the third category is like what I said was color coated products in the roofing segment, where the market is already there. It is dominated by few players in the country. With the launch of product from Apollo House, we can get some market immediately, because the same distribution channel will sell these products, right? So selling 300,000-400,000 ton shouldn't be much of a challenge if things remain as it is, right from Raipur. And when the plant will be like fully functional from Q3, Q4 onwards, next year FY24, the volume will ramp up to 700,000 ton to 1 million ton, and then 1.5 million ton in March 25. So we don't see much of a challenge
to achieve these numbers from Raipur project, because the work on marketing and creation of the market has already begun, and we are already seeing results which are visible, Rahul. I mean, I'm sure when we meet again on during Q1 earnings call, we'll be able to share much more information with you. But the signs, the trends are already visible. Got it, Anubhav. Thanks for the detailed answer. Just one question with Sanjay ji. Sanjay ji, this Shankara transaction, just wanted to know your thoughts that could have we signed the same agreement with Shankara without getting into equity stake, kind of deal with the company? Because I think it's been a long-standing relationship with Shankara. And how will, things really change after this transaction purely because you've invested money into the company? Any thoughts, sir? Boss, Shankara is a very good system and the distribution center for the South market. He have, I think, already 100 plus stores in the retail sector. And my South market is almost, in my business plan this year for Apollo business plan, is like almost 20 lakh ton. Out of 20 lakh ton is my plan for South is 7 lakh ton. और 7 lakh ton में like हमने last year 5.8 or 5.9 और lakh ton किया था, उसमें Shankara is 1 lakh ton. This year we are targeting Shankara to the all products. Tube is almost 2 lakh ton and 50,000 ton from new products. We are targeting 2.5 lakh ton from Shankara. और visibility हमको already आ रहा है. नंबर 2 क्या था कि अभी तक जब हमारा वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पर Shankara को उतना होल्ड नहीं था, तो lot of price competition is there between the distributor to distributor. तो under cost पे होके कंपनी को भी मार्जिन पे हिट लेना पड़ता था. Now we are in the controlling stage and we are controlling the market as well as distributors को भी हम सपोर्ट करके चल रहे हैं. Like आपको सिंपल एग्जांपल अपनी भाषा में मैं समझाऊं तो हमारा पहले ऑल ओवर इंडिया प्राइसिंग एक होता था. अगर आप टुडे आप हमारा प्राइसिंग सिस्टम देखोगे तो हमने साउथ में अपना प्राइस 1 रुपीज केजी से एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है. आवर प्राइस इंक्रीज बाई 1 रुपीज केजी एक्स्ट्रा इन द साउथ. तो हमारा कोशिश है कि वॉल्यूम प्लस मार्जिन दोनों को साउथ मार्केट में ऑर्गेनाइज वे में मैनेज करके जाए और सबको अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर फैमिली जो भी हमारी है सबको साथ में लेके जाए, मार्जिन को ट्रैक करके. तो उसमें क्या है कि काफी हमको अपना इन्फ्लेशन भी यूज करना पड़ता है. वो जब तक एक बहुत बड़ा बॉन्डिंग आपस में नहीं हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो आई थिंक दिस इज गुड फॉर द कंपनी. Got it, sir. Thank you so much for the answers. Best wishes for fiscal 23. I'll come back in the Thank you, Rahul. Thank you. Thank you. Participants are requested to kindly restrict your questions to 2 per participant. The next question is from the line of Pallav Agarwal from Antique Stock Broking. Kindly proceed. Yeah, good evening, sir. So first question was on, I think our volume guidance. So I guess you mentioned, something like 2 lakh or 2 million tons for FY23. So is that something, will we be again looking to maintain our 20% growth in volumes, which is our longer term target for FY23? Pallav, first of all, thank you for a very good question. Right now, on the volume side, हम अभी कुछ भी कम्पीट करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि मार्केट्स में इतने ज्यादा स्टील प्राइसेस में अप एंड वॉलिटिलिटी चल रही है. कभी $200 मार्केट प्राइसेस ऊपर है, कभी $200 नीचे है, कभी डीलर स्टॉकिंग कर रहा है, कभी डी स्टॉकिंग कर रहा है. तो वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम. लाइक अभी फरवरी मार्च में बहुत अच्छा हमने प्राइस अपर मोड पर डिमांड इज वेरी गुड. अब ये पिछले 20-30 डेज से काफी मार्केट में रूमर्स है कि स्टील प्राइसेस कम डाउन टू 60,000, 65,000. लॉट ऑफ रिपोर्ट्स एंड लॉट ऑफ न्यूज़ आर कम एंड इंटरनेशनल मार्केट इज आल्सो डाउन. तो कोई अभी मैं ब्रॉड वे गाइडलाइंस ऐसे नहीं दे सकता, बट हमारा जो बिजनेस प्लान हमको जो लग रहा है बहुत इजीली वी कैन अचीव. फर्स्ट हाफ मैंने हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात नहीं कर सकते. फर्स्ट हाफ हम देख रहे हैं कि हम 10 से 11 लाख टन का वॉल्यूम, 10 to 11 लाख टन ऑफ वॉल्यूम. सेकेंड हाफ 12 to 13 लाख टन ऑफ वॉल्यूम.
put together, we are taking a target of 2.4 million ton for this year. अभी तक हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि जब मार्केट चलती थी तो हमारे पास रॉ मटेरियल शॉर्टेज होती थी. जब हमारे पास रॉ मटेरियल होता था तो हमारे पास मार्केट नहीं होती थी. दिस ईयर वी लाइन अप विथ आवर क्वांटिटी ऑल्सो विद द स्टील प्लांट्स एज पर द 2.4 million ton. In the month of April and May, there is no doubt too much pressure is there because of market is totally in the destocking mode. Maybe एक आधा क्वार्टर ऊपर नीचे वॉल्यूम हो सकता है, बट जैसे जैसे स्टील प्राइसेस नीचे आएंगे, जो डिमांड रुकी पड़ी है, जो मार्केट में सेकेंडरी में प्राइमरी में डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट होगी थी, सब हमारे लिए बहुत अच्छे सिग्नल्स आ रहे हैं. राइट नाउ वी आर इन नॉट गुड पोजिशन, बट सिग्नल्स आर वेरी वेरी गुड फॉर द लॉन्ग टर्म विजन. तो वी आर वेरी हैप्पी कि जो एक बार वॉलिटिलिटी खत्म हो जाती है और ये स्टील प्राइसेस आर क्रैश डाउन एक रीजनेबल लेवल पे आ जाते हैं, जहाँ पर स्टील प्लांट्स को भी दिक्कत नहीं हो, कंज्यूमर को भी दिक्कत नहीं हो, यूटिलिटी को भी दिक्कत नहीं हो. तो दिस इज वेरी गुड फॉर द बिजनेस. और जो मेरे को लग रहा है कि वी आर वेरी वेरी नियर बाई, हम उसके बहुत नजदीक है. अभी टुडे इज द पेनफुल टाइम, बट वी आर वेरी होपफुल कि द फ्यूचर इज वेरी वेरी ब्राइट. इफ यू टेकिंग इंटरनल गाइडलाइंस, अगर आप मार्केट के हिसाब से पूछोगे, हमारा गाइडलाइन आई थिंक 20% इबिटा ग्रोथ का है, 1200 करोड़ का. बट इंटरनली वी आर टेकिंग ए टारगेट ऑफ 10 से 11 लाख टन फर्स्ट हाफ में विद मार्जिन ऑफ 500 to 600 करोड़ रुपीज ऑफ इबिटा. सेकंड हाफ में 12 से 13 लाख टन विद इबिटा मार्जिन ऑफ 700 to 800 रुपीज करोड़, 700 to 800 करोड़. इफ द टाइम इज गुड, मे बी वी क्रॉस 1400. If the time is not good, not in our favor, maybe this is close to 1200. Sure, sir. I think that was a very comprehensive answer. Just also, so you mentioned that, with prices coming down, you are more competitive now with the secondary, say, scrap-based players. So at what steel price level or HRC, is it like right now, let's say we had 72,000. Do you think at, say, 65 to 70,000 levels, then the price advantage? Right now, the HR coil pricing is, blended prices is close to 75,000 rupees per in the month of April. Now this month is 75. Okay, sir. Hello. Yeah. Please go ahead. April month pricing is of raw material pricing is almost close to 75, with 1,000 rupees plus minus depending on the customer. This month, I think there is an indication of decrease of 3 to 4 rupees kg. Price go to 70 or 71 rupees kg. Next month, I'm also seeing a decrease of 4-5 rupees kg. So I think the price should be, today the international market is close to $800 FOB. So the price is close down to less than 65 or 65 के बेस पर प्राइस आएगा. वहाँ पर बोथ आई थिंक स्टील प्लांट का भी कोल प्राइसेज आर कम डाउन, तो उनका भी कॉस्ट जून के बाद कम हो जाना चाहिए. तो दिस इज वेरी गुड फ्यूचर फॉर द स्टील प्लांट्स, ऑल्सो विद द कंज्यूमर्स ऑल्सो. हम प्री कोरोना स्टेज को नहीं देख सकते दोबारा, 40-45 वाला स्टेज दोबारा आ सकता है. बट आई थिंक द प्राइस स्टेबलाइज बिटवीन द रेंज ऑफ 60 और 65, दिस इज अ वेरी गुड पोजिशन फॉर द बोथ द साइड्स. Okay, sir. Yeah, thank you so much, sir. Thank you. The next question is from the line of Abhijit Mitra from ICICI Securities. Kindly proceed. Yeah, thanks for taking my question and congrats on a good set of numbers. The question is on the capex. So clearly you have upfronted the Raipur capex. Almost completed 60% plus of the same. And that's probably leading to, better than expected timeline as far as volumes from the project also are concerned. Now, given the incremental 300 crores that has been announced, where do that incremental capex goes into in terms of adding your capacity or adding your ROC or maintaining your ROC, or how to look at it essentially? Does that sort of support your EBITDA per ton? Does that increase your EBITDA per ton? Does that help maintain the ROC? Where in the overall equation does this kind of capex fit in, and do you see more scope for such capex going forward? Thanks. Thank you, sir. This other than the Raipur capex, almost about 300 crore of capex. This is, I think, a 0.5 increase our capacity by 0.5 million ton.
with a capacity of almost 3 lakh ton to Dubai and 2 lakh ton to Calcutta. Other than this, CapEx is vulnerable for the value addition, like there is some value addition activity going on in Hosur, some value addition activity going in Hyderabad plant, some activities going in our Duzana plant. So this little bit activity in Secunderabad and Murbad also. So all put together, this CapEx plan is 150 crores and cost improvement also. Major in this investment, one of my major investment is in the controlling of cost. If you see my presentation, there is clear mention innovative galvanizing line to improve efficiency by 100 crore rupees to help reduce zinc consumption by 4 kg per ton. तो this means कि अभी हम whatever we are quoting the products वहाँ पर हमारा जिंक जो पर टन लग रहा है almost close to 11 to 12 kg लग रहा है. But अगर because this plant and this technology is very old, almost 13-14 years before I innovate this technology with a very less cost. Now जो उस समय हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं था, तो हमको इतना फर्क नहीं पड़ता था. But now my production is too big. तो 4 kg अगर मैं इसमें जिंक कॉस्टिंग को अपना कम करता हूँ प्लांट को इम्प्रूवमेंट करके, तो अगर हम 7 लाख टन पर एनम हम पाइप ये जिंक कोटिंग करते हैं, तो 7 लाख टन पर 4 kg से ऑलमोस्ट 3000 टन होता है, जो इट्स कॉस्ट टू 80 और 90 और करोड़ रुपीस. तो इसमें आप कह सकते हो हमारा वैल्यू एडिशन के ऊपर भी खर्चा है, इसके ऊपर कुछ कैपेसिटी एडजस्टमेंट के ऊपर भी खर्चा, कुछ कॉस्ट कंट्रोलिंग के लिए भी खर्चा है. So Vijay, that's very comprehensive. Yeah, that's very comprehensive. That answers my question. Thanks. Thank you. The next question is from the line of Shalin Kumar from UBS. Kindly proceed. Yeah. Hello, Sanjay and the team, and congratulations on a very good set of numbers, sir. एक क्वेश्चन का आंसर आपने किया, which I wanted to ask कि volatility है मार्केट में, तो अप्रैल और मई में सॉफ्ट रहेगा, तो आई थिंक आपने हिंट किया है कि थोड़ा सॉफ्ट है अप्रैल और मई. दूसरा कॉस्ट में ये एनर्जी प्राइसेस हैव आल्सो रैलीड, तो उससे अपना बेटा पे काफी फर्क पड़ेगा क्या अभी इन द सालिन? हमको पॉइंट बेसिस पर 0.2-0.1 बेसिस पॉइंट का फर्क पड़ता है, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट जो हमारा है वो ऑलमोस्ट 400-500 रुपीज टन का है. तो 500 का 550 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 450 हो जाएगा, हमारे लिए उतना बड़ा मैटर नहीं करता है. ओके तो इट्स उस तरफ रखने पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, चलिए अपना होम इम्प्रूवमेंट में वॉल्यूम पिकअप, लाइक अगर मैं ईयर ऑन ईयर कंपेयर करता हूँ तो ज्यादा नहीं है, राइट? फॉर द फुल ईयर 22 देखूँ वर्सेस 21 देखूँ या क्वार्टर देखूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइक डिमांड इज नॉट देयर, या क्योंकि प्राइसेस स्टील प्राइस बढ़ गया है? व्हाट इज स्टॉपिंग अस? बिकॉज FY21 से 22 हमने बहुत शार्प ग्रोथ देखा था. सालिन, आई अंडरस्टैंड क्वेश्चन. आपको इसका जवाब समझने के लिए आपको पहले इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, ये इकोनॉमी को समझना पड़ेगा. थोड़ा सा इसका जवाब लंबा है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ. टुडे इंडियन मार्केट इज ऑलमोस्ट 110 मिलियन टन. ओके. इसमें आउट ऑफ 110 मिलियन टन 7 मिलियन टन इज ऑलमोस्ट स्ट्रक्चरल ट्यूब्स. 6% के आसपास मैं मान के चलता हूँ कि इंडिया में कोई बहुत एजुकेटेड नंबर नहीं, पर ये नंबर बहुत आसपास है. 7 मिलियन टन का इंडिया में ये स्ट्रक्चरल ट्यूब का मार्केट है, जिसमें इस समय 3 मिलियन टन के आसपास मार्केट है प्राइमरी स्टील पे, और 4 मिलियन टन के आसपास मार्केट है सेकेंडरी स्टील पे. जी. आज प्राइमरी स्टील का रेट है 75 रुपीज के जी, जो हमारा HR क्वाल है. जी. और जो सेकेंडरी स्टील से रॉ मटेरियल बनता है उनका रेट है 60,000 रुपीज टन. अच्छा. ऑलमोस्ट 15,000 रुपए का गैप है. ये गैप जब तक 5-6 रुपए किलो रहता है तो वी आर इन वेरी कंफर्ट पोजिशन. 500 से नीचे जाता तो वी आर ऑन द रॉकिंग मोड. अगर ये गैप 15,000 रुपए रहता तो वी आर ऑन द हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट बिजनेस का सो जाता है, क्योंकि एक तो गैप्स हो गया, दूसरा हम लोग थोड़ा ज्यादा मार्जिन रख के माल बेचते हैं, वो लोग बहुत लो मार्जिन पर काम करते हैं, तो गैप बढ़ के कुछ लो थिकनेसेस के प्राइसेस एक्स्ट्रा हो जाते हैं हमारे, तो टोटल गैप ऑल इंक्लूसिव 20,000 रुपीज पर टन का हो जाता है.
और स्टील प्राइस जितना ऊपर है तो उसमें कंज्यूमर बोलता है कि यार ठीक है अभी इतना कॉस्ट बढ़ गई तो थोड़ा सा सस्ता वाला माल लेके चले जाओ। बट जैसे जैसे हिंदुस्तान में कैपेसिटीज HR कॉइल की बिल्डअप हो रही है, लाइक अभी लास्ट में ये 3 महीने पहले सेल का राउरकेला स्टील प्लांट चालू हो गया। इससे पहले सेल हमको कभी भी 50,000 टन मटेरियल ऊपर देने को एग्री नहीं करता था। नाउ दे आर अप्रोचिंग अस फॉर टू टेक 2 लाख टन फॉर दिस ईयर। जिन लोगों को कभी भी 9 लाख टन से ऊपर माल देने को उनका डॉल भी चालू हो गया है, हमको 9-10 लाख टन से ऊपर माल देने को एग्री नहीं करता था। दिस ईयर दे साइन एमओयू विद अस फॉर 15 लाख टन। टाटा से हमारा एमओयू सेम क्वांटिटी पर हमने रिव्यू किया है। तो अब आगे 1 साल के अंदर में JSPL में भी HR कॉइल का प्लांट आ रहा है, ये बिलारी में भी स्टील पर ये HR कॉइल का प्लांट आ रहा है। तो मेरे अपने विजन से 2 साल में हिंदुस्तान की मार्केट जो स्टील की है, ये HR कॉइल की डबल कैपेसिटी होने जा रही है इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। और इनका जो बेसिक कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो ये सेकेंडरी का और प्राइमरी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज प्राइमरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस, बट ड्यू टू इन्वेस्टमेंट उनका डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के कारण उनका सेलिंग प्राइस बढ़ जाता है। बट जैसे भी कंपटीशन बढ़ेगा तो मेरे को लगता है ये सेकेंडरी को हिट करेंगे, और जैसे जैसे सेकेंडरी को हिट करेंगे तो 4 मिलियन टन का सारा मार्केट वापस क्वाइल पे आएगा। और इधर से इंडिया का ये टोटल स्टील कंजम्पशन अगले 3 साल में 200 मिलियन टन होने की बातें हो रही है। अगर 200 मिलियन टन होता है और स्टील ये ट्यूब का यूजेज जिस हिसाब से बढ़ रहा है, अगर ये मार्केट बढ़ के 8% भी हो जाती है तो 16 मिलियन टन इंडिया को ट्यूब चाहिए होगा जी। और इंडिया में भी टोटल कैपेसिटी 7 मिलियन टन की है। अब हमारी 1 मिलियन टन की एक्स्ट्रा कैपेसिटी मान लो, अब 1 मिलियन टन की टोटल कैपेसिटी है और 1 मिलियन टन की कैपेसिटी लोगों की आइडियल पड़ेगी, 9 मिलियन टन की कैपेसिटी है। आज अगर ये 16 मिलियन टन की डिमांड क्रिएट होती है तो हिंदुस्तान में अपोलो के अलावा कोई दूसरा ब्रांड नहीं है जो इतनी कैपेसिटी को फुलफिल कर सके। मैं तो सिर्फ एक इसी विजन पर काम कर रहा हूँ, जिसका हमने झलक पिछले 2 महीने में फरवरी और मार्च की आप देखोगे तो हमने सिर्फ 50 दिन काम किया फरवरी और मार्च में। फिर आफ्टर 20th of March we closed our plans to taking the physical stock on the zero level कि हम 10-10 साल 15-15 सालों को तो अपने प्लांट को जीरो स्टॉक पर कभी नहीं दिखा। तो हर प्लांट में जाके मैं तो गिनती कर नहीं सकता, तो मैं तो अपना देसी आदमी हूँ। मैं कहा यार प्लांट खाली करो, जीरो स्टॉक पर लेके जाओ। हमारा इन्वेंट्री देखो प्लांट की, तो आप अगर ये प्लांट वाइज इन्वेंट्री हमारी देखोगे 31 मार्च की तो बहुत लेस है। मैं हसूर जैसे हमारा जो 40,000 टन का प्लांट है वहां पर सिर्फ 3,000 टन मटेरियल था जी। तो हमने वो स्टॉक 50 डेज में हमने ऑलमोस्ट 3.7 लाख टन माल हमने बेचा था। राइट। आई एम वेटिंग फॉर जो ये विंड मिल जो कहते हैं आई वांट टू स्वीप विद द वेव्स। मैं उस टाइम में तैयार कर रहा हूँ, मेरी कैपेसिटी उस टाइम के लिए लगाई है। ये तो मैं अपनी उस एक टाइम पास कर रहा हूँ वैल्यू एडिशन करके, ये सब करके। जिस दिन ये होगा कि मटेरियल दो, देन अपोलो इज इन द थर्ड साइड, और ये टाइम आएगा। हम उस टाइम तक के लिए बस अपने आप को बचा कर रखना चाहते हैं कि हम कहीं पर क्रैश नहीं करें, हम कहीं पर कोई गलती नहीं करें, हम कोई पर डेट ट्रैप पे नहीं फंसे। वी जस्ट वांट टू वॉक ये वेरी सेफली। नंबर मेरा 1 क्वार्टर 1 साल मेरी ऊपर नीचे हो जाए, आई एम नॉट वरी। माई विजन इज 2025 कि मेरे को किसी भी हालत में 4-5 मिलियन टन के बीच में पहुंचना है, 2,500 करोड़ का बिट्टा पूरा करना है, और वहां तक मेरा ये टाइम जरूर आ जाएगा। आई एम वेरी वेरी होपफुल। डाटाज कह रहे हैं, सिचुएशंस कह रही है, लाइक अब देखो अगर ये स्टील प्राइसेस अब 1 महीने में करेक्ट होता है तो नो डाउट होगा हमारी सेल डाउन है, मतलब बहुत तेजी से कवर अप कर लेंगे। आई नो वरी। राइट। थैंक यू संजय जी। आपकी एनर्जी फ्रैंकनेस को देख के हमें बहुत इंतजाम आ जाता है। We hope definitely जो मैं देख रहा होता हूँ वही बात करता हूँ। अब इसमें गलत है अच्छा है मेरे को नहीं मालूम, किंतु मैं जो देख रहा हूँ बात करता हूँ। There is a good fan following of you, Sanjeev. Thank you so much. That's a very very good answer, sir. Thank you. Thank you. I'll join the queue. Thank you. The next question is from the line of Ankush Agarwal from Surge Capital. Kindly proceed. हाय टीम। संजय जी अभी अपना इन्वेंट्री डेज कितना है? इन्वेंट्री डेज हमारा लेस देन 30 डेज होगा। तो कितना है? 24 डेज है। तो सर नेक्स्ट 2-3 इयर्स में अपन जो ये सब ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं वैल्यू एडिशन में और
एडिशनल प्लान डाल के, तो अपना इन्वेंट्री डेज में कुछ सब्सटैंशियल डिफरेंस आएगा कि स्टेबल रहेगा 20 डेज से नीचे लाना इम्पॉसिबल है। 30 डेज मैक्सिमम, 30 डेज मिनिमम 20 डेज। 30 डेज से ऊपर जाता है मतलब हम कहीं गलत ट्रैप हो गए। 20 डेज से नीचे जाता तो फिर मतलब हम मार्केट को खराब कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे हमारे वेयर हाउसेज है, हमारे इतने सारे ये सेगमेंट्स हैं, इतने सारे हमारे एसक्यूज हैं, तो नॉट पॉसिबल। And in FY17 we used to have 44 days of inventory. So we have already rationalized and worked hard to bring this down to 23-24 day level. Right. सर ये 20 से 30 दिन का जो रेंज है, इसमें आप अपने को कोई बड़ा इन्वेंट्री लॉस होने का पॉसिबिलिटी कम है, राइट? तो अब लाइक हमारे पास टोटल अगर आप देखोगे 1,10,000 टन का हमारे पास स्टॉक था टोटल, उसमें 20-40,000 टन माल हमारा बिका हुआ भी होता है। 50-60,000 टन माल है, उसमें रुपए 2-4 रुपए ऊपर नीचे कट गया बढ़ गया हम नहीं देखते। अब हमने ना गेन देखते ना हम लॉस देखते, इस टाइप से तो बाहर आ गए हमको। हाँ, इससे जरूर फर्क पड़ता है कि जब अभी स्टील प्राइसेस ऊपर है तो हमारे मार्जिन प्रेशर में आ जाते हैं थोड़े से। राइट, गॉट इट। सेकेंडली सर, ये हमने प्रेजेंटेशन में मेंशन किया है अबाउट सम सेकेंडरी सेल्स ऑन पायलट बेसिस इन 8 स्टेट्स, ये थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हैं? Sorry, come again? We have mentioned something about secondary sales on the presentation within 8 states that you have started on pilot basis. Can you clarify something on that? Right. So this is in the distribution strategy, because this is right now one of the core pillars over the next 3-4 years. So one is that we are strengthening our south market by joining hands with Shankara. Second is what we have observed in other B2C franchisee business models is that there has been a lot of focus on the secondary sales, right? Reaching to the retailer of our distributors, the retail counter which our distributor is servicing. Okay. So we have created a team who is going and promoting Apollo brand at the retailer counter level. So from primary we have created this pilot project to work on the secondary model also. So right now we have launched it in 7 states. Once we see the benefits, then this can be replicated on pan-India basis. Right. So Apollo will sell directly to the retailers and not through the distributors in this time? No. Apollo will promote its product. The sales will happen through the distributor. Okay. It's just a marketing effort, that is. Yeah, right. Right. Lastly, sir, just a small one. We have talked a lot about market formation. So, anything specific, like, if the HRC prices remain quite high, will that affect market creation for our new products from the Raipur plant? See, I mean, today when steel prices are at all-time high, right. I mean, Raipur, there are 2 products. One is heavy structural, second is color-coated. Right, so let's talk about heavy structural first. So at steel price peaking out at 75 rupees per kilo, the cost differential versus RCC is 250 rupees per square foot. Okay, at the construction level. So this is like 3 to 4% of the overall project cost, and then the TMT prices, which is called rebar, the cement prices have also risen, right? So the delta used to be 250 and it is still at 250 rupees per square foot, because all building material products are going up. Okay, so in fact, if prices come down, the delta will come down in favor of tubular construction. Second, on steel, for color-coated steel, there is no other alternative, right? So for roofing, for cladding, for walls, for door frame, you have to buy steel only, right? So that has no substitute. Steel is the only product in the color-coated category which is used. So for that, the contractors have to use that. All they can do is they can delay their purchase by few weeks in anticipation if prices are coming down. But if prices don't come down, if they have to finish their project, they have to buy steel. Right. Anumam, just a small clarity in terms of color-coated products. So, are we price competitive when, when it comes to, someone buying a non-color-coated products, coloring it and then fitting it versus, supplying a color-coated product directly, since we are doing it in color? Is that competitive? बस पहले कलर, हमारा कलर का कंसेप्ट समझो क्या है
इंडिया में अभी तक जितने भी कलर प्लांट्स है, इंडिया क्या वर्ल्ड वाइड जितने भी कलर प्लांट्स है, वो 1.4 थिकनेस तक लिमिटेड है. Nobody is making above than 1.4 thickness की कलर कोटिंग. कोई भी प्लांट इस बेस पर डिजाइन नहीं है, तो हमने इस प्लांट को डिजाइन किया है 3 मिलीमीटर तक के हिसाब से. वी आर कलर कोटिंग इनटू अप टू 3 मिलीमीटर. तो पहले जैसे 1.6 और 2 mm इज द मेजर मार्केट फॉर द ट्यूब इन द कलर. तो जो भी डिमांड आती थी लोग क्या करते थे, प्री गैल्वेनाइज्ड ट्यूब लेते थे, उसके ऊपर फिर पेंट से या पाउडर कोटिंग से कलर करके माल को देते, सप्लाई करते थे, या मना कर देते थे दिस इज नॉट पॉसिबल. लाइक पीवी में जो इंडस्ट्रियल सेट्स बनते थे, उसमें ऊपर और नीचे तो सब तरफ से साइड से वो लगे थे ये कलर शीट्स, बट पर्लिंग में 2 mm थिकनेस का वो जेट पर्लिंग लगता है. Nobody is able to take the jet purling of color. तो वो लोग उस पर जीपी लगाते थे. Now we are slowly replacing this product from the our color. तो purling में last month we have supplied almost in the month of April 1000 ton color sheet. And tube में तो हमने just start किया तो 50 ton माल गया होगा last month में. This month we are planning in purling 2000 ton, 1000 ton in tube. तो और नंबर 3 इसमें डोर फ्रेम. डोर फ्रेम में क्या होता था, पहले लोग इसको बहुत सारे छोटे छोटे फैब्रिकेटेड डोर फ्रेम बनाते हैं वो ऊपर स्टाइल में, उसके लिए वो शीट खरीदते थे, उसके बाद उसको पाउडर कोटिंग कराते थे. तो अब हमने उनको 1.8 2 mm 2.2 मिली का उनको ये उनके साइज का हमने उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू किया है. तो आई थिंक इन दिस सेगमेंट 3 सेगमेंट्स में पुट टुगेदर मेरा इस लाइन का कैपेसिटी 1.25 लाख टन के आसपास है पर एनम का. तो विद इन 1 or 2 months हम पूरा लाइन को बिजी कर देंगे. Right. That is what I was asking. That was very helpful. Thank you, Sandeep. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Anupam Gupta from IIFL Capital. Kindly proceed. Yeah. Good evening, sir. Congrats for the good set of numbers. Just 2 questions. Firstly, this Dubai capex of 3 lakh tons. What is the rationale behind it, and is exports getting into as a target as well, apart from the India operations which you do? और अभी हमने इस रायपुर में हमारी 300 स्क्वायर की लाइन लगी हुई थी. दिस लाइन टुडे कॉस्ट इज ऑलमोस्ट 75 to 80 crore rupees. अब हमारा 500 स्क्वायर का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है उससे हमारा ये लाइन टोटली फ्री हो गया था. इस लाइन पर उतना मैंने वर्क नहीं रहेगा, उस पर रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि 500 स्क्वायर वाली मिल की हमारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है. ये मिल यहाँ पर आइडियल हो जाती. दुबई एक बहुत अच्छी मिडिल ईस्ट की बहुत अच्छी मार्केट है. हम यहाँ से वहाँ दुबई पर इस लाइन का कम से कम 1000 टन माल मटेरियल महीने का भेज भी रहे थे. तो हमको ये लगा कि लाइन यहाँ पे आइडियल है. दुबई एक अच्छी मार्केट है उसकी. अगर वहाँ पर रेडी डिलीवरी हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो उसमें वो वहाँ पर लाइन काफी अच्छी चल सकती है. नंबर 2, जिस हिसाब से लास्ट 2-3-4 मंथ से ऑल प्राइसेज आर हाई, तो मेरे को लगता है मिडिल ईस्ट में आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी. तो इन दोनों चीज को ध्यान रखते हुए मेरा कोई ज्यादा कैपेक्स नहीं था. एक 75-100 करोड़ का कैपेक्स आएगा मेरा उसके ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर. मशीन पर मेरा कोई भी कैपेक्स नहीं. मेरा वहाँ पे दुबई में हम प्रेजेंस हम पिछले 2-3 साल से ट्राई तो मार ही रहे थे. एक प्रेजेंस बना के देखो, अगर वो प्रेजेंस हमारा सक्सेस होता तो धीरे धीरे हम इसको और बढ़ाएंगे. बट दिस इज जस्ट ए इनिशियल स्टेज. तो अभी पहले तो एक बार हम छोटा से करके देखना चाहते हैं. ओके. तो सर जैसे आपने इंडिया के लिए आपने आउटलाइन किया कि आप कैपेसिटी देख रहे हैं 5 मिलियन टन का पॉसिबली. दुबई पोटेंशियली इफ यू फाइंड इट वेल, वो कितना जा सकता है? आप व्हाट विल बी योर एस्पिरेशन? तो अब तो अभी जो हमने लैंड लिया उस पर हम 0.5 मिलियन टन तक जा सकते हैं. ओके. बट इफ द रिस्पॉन्स इज यू आर रेडी टू एक्सपैंड दैट फर्दर ऑल्सो. बस उस समय हमारे पॉकेट में कितने पैसे हैं, वहाँ मार्केट में क्या दर में मार्जिन क्या आ रहा है. अगर मार्जिन अच्छा होगा, हमको कैपेक्स करने में प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर और बढ़ाएंगे. ओके. अंडरस्टैंड. And the second question is on the new product innovation and the market creation which you do. So you highlighted that you have a lot of patents which you have at this point of time, and these patents have been increasing all through the year. So if you were to, can you give me a share of the volume which has come from these patents, let's say in FY22 versus FY21 versus FY20 volume? बस इसमें वॉल्यूम्स तो पेटेंट प्रोडक्ट का हमारा बहुत कम है, बट ग्रोथ मार्जिन हमारा बहुत अच्छा है. ग्रोथ मार्जिन हमारा ऑलमोस्ट 40 to 50% आता है.
और आप टोटल अगर टन में वॉल्यूम देखोगे तो हमारा ये टोटल वॉल्यूम आता होगा 8 to 9,000 टन पर मंथ। 1 लाख टन। 1 लाख टन पर एनम का इसमें जो बट ग्रोथ रेट जो हमारा 40% के आसपास है। Okay. Okay. Understand. That's all from my side. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Bhavin Pandey from Trust Family Office. Kindly proceed. Yeah. Hi, good evening, team, and congratulations on excellent set of numbers. I have just one question regarding general products. As we can see that EBITDA per ton from this product is below 2,000 rupees, but the contribution still stands stronger in the overall scheme of things. So I was just wondering, as we plan to gradually transition towards value-added products, how do we plan to deal with this segment in particular? Thank you. So if you see this general category, it used to contribute 60% in FY18 fiscal, which is down to 37% by fiscal 22. Okay, so we have already decommoditized our portfolio in a big way, and going forward with our Raipur plant starting contributing first. Second, the value addition, what we're going to do in Hyderabad and Hosur plants, right, and the other small value addition which we will do in other facilities. Then our heavy structural tube moving to Dubai, that again is a high margin product. So overall, this mix will go down to 20-25% in next 2-3 years from 33% today. Okay, so our strategy is to keep on decommoditizing our portfolio year on year, as you are seeing, and this volume will remain constant at around 1 million ton when we will be producing 4 to 4.5, 5 million tons of sales volume. The general categories volume will restrict to 1 million tons. Right, so that will remain because it's a ready, we have ready facilities, ready distribution. Our SKU range gets completed. So once this as a mix it goes below 20%, then it won't impact our EBITDA per ton on quarterly or yearly basis. Okay, so if this transpires, so assuming around 25% contribution from commoditized products, so how much EBITDA per ton are we looking in the long run? So see, I mean, today, if you see, this year we closed at 5,200, 5,300 rupees per ton, right? So from the existing capacity, our focus is to sustain this number around 5,000 per ton. And the incremental revenue which will come from Raipur, that will bring EBITDA of like 6,000 to 7,000 rupees per ton. So blended basis, we should be inching towards 5,500, 6,000 rupees per ton slowly and gradually. Okay, that was helpful. Thank you, Anupam. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Rajiv Mehra from Sanctum. Kindly proceed. Yeah, good evening, sir. Congratulations on a great set of numbers. Most of my questions have been answered. Just wanted to clarify a couple of things. You said that FY25 you are looking at touching volumes of around 4 million tons, and I think you've already given the breakup of market. Just wanted to say the structural tube market currently stands at 7 million, which should grow to 16 million in the next 3 years. Did I hear that correct, sir? Yes, maybe possibly it is still concerned go to 110 million to 200 million ton. 110 to 200 million ton. Okay. 110 to 200 million ton, what the industry and the governments are saying. Got it. And so as your these capacities are coming online and as your value added products are increasing, currently from a 55% market share overall, what market share would you be inching towards? Would it be around close to 60 to 65%? And as your EBITDA per ton moves up, which ideally you are trying to reach in the blended region of 5,500 to 6,000, if we compare it with your peer group, the blended EBITDA margins, which right now stand at around 7%, but globally a few peer group companies are in the higher range. Can we reach closer to say a 9.5% EBITDA margin over the next couple of years, sir?
So coming to point number one, which is regarding the 55% market share. See, I mean, we don't look at market share based on like what we sold and what's the market size. This is a function of two things. One is in the segment which is highly competitive, what is our market share, and in the category which is monopolistic, which is bulk of our business, right? Whenever we launch a new product, whenever we innovate, we begin with 100% market share. Okay, and that market share remains with us for next 2-3 years before competition start putting up or copying our capacity, right? And then again, after 3 years, we have another product which would come and we will have 100% market share to begin with. So our sales growth is not confined with our market share today, which is at 55%. How we want to grow is that we create totally new market, totally new segment. We create demand there and we take 100% market share for at least 3 years, right? If my monopolistic innovative products keep on growing, my market share could be 60%, 70%, and I can still grow if I'm able to increase the market with my innovative products, right? So given that in 3, 4, 5 years the competition increases in any product category, so we can sustain between 50 to 60% easily and still achieve the high growth which we are targeting. Got it. And secondly, on margins, we responded to the earlier caller that I mean we are at 5,500 rupees per ton range in terms of EBITDA. With the commencement of Raipur plant, which is definitely high margin product, on overall basis, we would like to gradually increase to 6,000, 6,500 kind of levels in next 2-3 years, and see how what the innovative products or what value addition we are able to do in next 2-3 years, where we can grow, where we can take our EBITDA to. So the immediate target is to reach to 6,000-7,000 rupees in the next 3-4 years. Got that. Just one last question. Just wanted to, I mean, you already touched upon this point, but just wanted to reaffirm what you were saying, that in case of the steel prices move up, say, by another 10-15%, how much sensitivity will be impacting your margins or your volume going ahead, and how would that play out even in the same case if it goes down by, say, 15%? See, in last 2 years, steel prices have moved from 35 rupees per kg to 75 rupees per kg. Right. In last 2 years, you can see our profitability in terms of EBITDA, net profit, debt reduction, cash flow generation, working capital reduction. So we have been able to, and why only 2 years, right? You look at our 10-year history. Steel prices have moved from like any level to any level, right? Steel has been very, very volatile commodity. But if you look at our consistency in terms of volume growth, which has been 18-19% CAGR, you look at our EBITDA growth, which has been 25% CAGR, you look at our PAT growth, which has been 26-27% CAGR, you look at our constant, consistent ROC improvement, right? You look at our ROE improvement, you look at our cash flow generation, you look at our working capital enhancement. So I guess, I mean, as a group, we have demonstrated our capabilities to grow profitably in any cycle, whether up cycle or down cycle in steel, right? So I mean, we are not, there could be impact of few weeks or few months, but on annualized basis, on consistent basis, you will keep on seeing the consistency in our numbers. Got it. Thank you for answering my questions and all the best for the future. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, the management will be taking one last question. It is from the line of Mr. Bharat Shah from ASK Investment Managers. Kindly proceed. Moderator, we can continue with the call after Bharat Bhai's question. We can take more questions. Sure, sir. Sanjay, I was just trying to raise a question and then the line got shifted. Apart from the numbers and, improving profitability, introducing specialty products, and the size of opportunity with the growing steel capacity,
India being favorably poised there and improving percentage of structural steel tube as a percentage of steel. If you have to lay down your vision as to how you see in this unfolding scenario, APL Apollo, and what is it that you are most passionate about? What is it that excites you the most when you look at next 5 years or 10 years in this journey? What are some of the things that really drives you as an entrepreneur? Bharat bhai, क्या है कि today's market signal is changing very fast. Like फरवरी मार्च में हमको ये लग रहा था कि हमारी जितनी भी कैपेसिटी लगाई भी है वो इतनी कम क्यों लगाई भी थी, रॉ मटेरियल अरेंजमेंट हमने इतना कम क्यों किया हुआ था. अप्रैल मई में ऐसा लग रहा है कि हमने इतनी कैपेसिटी क्यों लगाई, हमने इतना वॉल्यूम अरेंजमेंट क्यों किया है. तो मार्केट में क्या है कि अगर आप 2 साल से देखोगे तो वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है. इसमें 5 साल 10 साल का मैं कमेंट पास ऑन करूं तो इट्स नॉट गुड. बट मेरे को जो लगता है कि इंडिया इज ए ग्रोइंग मार्केट और इन स्पाइट ऑफ रिस्पेक्ट टू मिस्टर इंडियन गवर्नमेंट, मिस्टर मोदी जी एंड हिज टीम, पूरे कंट्री में बहुत अच्छा काम हुआ है. और ये काफी डिस्ट्रक्टिंग हुई है पूरे कंट्री में. लाइक जिस हिसाब से हमारे पास इंक्वायरीज आ रही हैं मेट्रोज की, एयरपोर्ट्स की, तो उसको देख के लगता है कि इसमें किसी भी लेवल पर डिमांड जा सकती है. बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि पिछले 2 साल में स्टील प्राइसेज इज इंक्रीज फ्रॉम 35 टू 75 रुपीज केजी. उसमें जितने लोगों ने प्रोजेक्ट्स ले रखे थे, कुछ भी काम कर रखा था, वो लोग या तो कोई ये दूसरा प्रोडक्ट ढूंढने लगे इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए, क्योंकि उनकी कॉस्ट से ये बाहर हो गया था और प्रोजेक्ट को स्लो डाउन करके बैठ गया है. इफ ऑल द थिंग्स कम इनटू द पिक्चर, तो जैसा अगर आप देखोगे वर्ल्ड वाइड छोटी छोटी कंट्रियां हैं जहाँ पर 10-20 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां पर मिलियंस ऑफ टन ऑफ ट्यूब बनाने वाली कंपनियां हैं. मैं अगर आप इटली में देखोगे तो देयर इज कंपनी कॉल्ड मासे गालिया, ही इज डूइंग ऑलमोस्ट 2.4 मिलियन टन. यूएस में देखोगे तो देयर इज कंपनी ऑफ जैकलमैन इंडस्ट्रीज, ही इज कैपेसिटी ऑफ ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन टन. तो छोटी छोटी कंट्रियों में जहाँ पर डेवलपमेंट है वहां पर 2.5 मिलियन टन की कंपनी. अगर चाइना को देखोगे तो इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी, कैपेसिटी ऑफ 13 मिलियन टन, 13 मिलियन टन कैपेसिटी, 13 मिलियन टन का कैपेसिटी कंपनी कॉल्ड यूफा. तो एनीथिंग इज पॉसिबल. बट प्रॉब्लम ये है कि आज मैं आपको नहीं बोल सकता मैं 10 मिलियन टन करूंगा, 15 मिलियन टन करूंगा. अगर आज मैं इंडिया का ये 110 मिलियन टन का स्टील कंजम्पशन में 4 मिलियन टन प्लांट लगाने की सोच सकता हूँ, तो कल को जब इंडिया की कंजम्पशन 200 मिलियन टन पहुंचेगी तो आई कैन थिंक अबाउट 8 मिलियन टन और 10 मिलियन टन प्लांट. आई एम रेडी. मेरा सिस्टम को डेट पर नहीं है, मैं कैश फ्लो जनरेट कर रहा है. हमको कोई कैश बर्न बिजनेस नहीं क्रिएट करना होता है. हम हर शेड्यूल से रेडी है. बट मैं कॉल नहीं ले सकता आज इतनी बड़ी, मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ. इट्स टू अर्ली टू गिव एनी दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट. बट अगर मार्केट चलेगी, वी हैव हमारा सिस्टम का जो स्ट्रेंथ है, वी आर द वर्ल्ड लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन है. हम ट्यूब को हम सबसे लो कॉस्ट पर बनाते हैं. एवरी डे वी आर वर्किंग ऑन द कॉस्ट कि हम अपनी कॉस्ट को कैसे कम करें. लाइक अभी अपने कॉल में मैंने सिंपल एग्जांपल दिया कि मैं जिंक कोटिंग पर काम कर रहा हूँ, जिससे मैं 4 kg जिंक कोटिंग कम कर दूंगा, जिससे मेरे को ऑलमोस्ट 80 to 90 करोड़ रुपीज पर एनम का सेविंग आ जाएगा मेरा. मैं इसी तरह फ्रेट फैक्टर पर बहुत काम कर रहा हूँ. मैंने फ्रेट फैक्टर को अपना काफी रिड्यूस किया है. इसी तरह से मैं पावर पे, अपने रिजेक्शंस पे, मिल टू मिल, लाइक हमारा इस समय टोटल 47 लाइन्स वर्किंग है. अब सब लाइन में हमारा एवरेज ट्यूब रिजेक्शन जो है 2.6% के आसपास है. उसमें किसी लाइन में 1.6 भी है, किसी लाइन में 3.5 भी है. तो हम जो हमारे बेंचमार्क से ऊपर के रिजेक्शंस के ट्यूब मिल्स हैं उस पर बहुत काम कर रहे हैं कि उसके रिजेक्शंस को कैसे कम करें. हमारी कटिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट हमारी 60 रुपीज पर टन की आती है. अब किसी लाइन पे हमारी कटिंग कॉस्ट 15 रुपए टन है, किसी लाइन पे हमारी कॉस्ट 150 रुपीज टन है. तो उस पर बहुत काम कर रहे हैं कि जहाँ पर 150 रुपीज टन की कटिंग है जो बिगर साइज में आती है, उसको कैसे प्लाज्मा कट पर या लेजर कट पर लेकर जाएं कि हमारी कॉस्ट 10-15 रुपए टन आ जाए. तो इस तरह छोटे छोटे कॉस्ट पर मैं बहुत काम कर रहा हूँ. इनोवेशन पर बहुत काम कर रहा हूँ. ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप पर बहुत काम कर रहा हूँ.
कि हमारा सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। अगर आप हमारे जो साल का सबसे बड़ा विजन है, अगर आप मेरे बिजनेस का 2 पार्ट में बांट के देखोगे कि हमने टोटल 17 लाख टन का काम किया है। 17 लाख टन में से 5-6 लाख टन का काम हमने किया है लक्ष्मी, अपोलो मेटलिक्स एंड ट्राइकोट मिला के, तीनों कंपनी जो हमारी सब्सिडरी है, और 10 से 11 लाख टन का काम किया हमने अपोलो में। और हमारा जो EBITDA मार्जिन है दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल है, बराबर है, 500 करोड़ का दोनों में मार्जिन है। तो मेरा इस पूरा फोकस है कि जो 11 लाख टन पर मैंने 500 करोड़ कमाया है और वहां 5 लाख टन पर 500 करोड़ का कमाया है, तो इसको 11 लाख टन के मार्जिन को मैं कैसे इंक्रीज करूं। लास्ट 2 साल से मेरा दिमाग पूरा मार्जिन पर काम कर रहा है कि हाउ टू आई इंक्रीज माई मार्जिन। तो जैसे ही मार्जिन पर मेरे को लगेगा कि अब यहाँ पर ज्यादा कुछ करने को नहीं रह गया है, तो फिर हम वॉल्यूम की तरफ ध्यान आएंगे। लाइक अभी हमारे बहुत सारे ट्यूब में सेगमेंट्स जो हमसे छूटे हुए हैं, लाइक अभी आप देखो एपीआई में कहीं हमारी प्रेजेंस नहीं है, ऑटो ट्यूब में हमारी कहीं भी प्रेजेंस नहीं है, वाटर लाइन में हमारी कहीं भी ज्यादा प्रेजेंस नहीं है। वाटर लाइन में प्रेजेंस तो है बट बहुत नॉमिनल है। तो हो सकता है कल को फ्यूचर में सब पर थिंकिंग करेंगे, बट अभी मेरा सिंगल पॉइंट फोकस है कि पहले एक बार मैं रायपुर पूरा कर दूं। 4 मिलियन टन का हमारा कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगा। 5 मिलियन की ऑलमोस्ट हम तैयारी करने में लगे हुए हैं। इसमें से 3.54 मिलियन टन अचीव कर लूं अगले 1-2 साल में, कि मैं आगे फिर 8 और 10 मिलियन टन की बात करने लायक हो जाऊं। तो आई एम ए ट्यूब पर्सन, मेरा ट्यूब के बाहर कोई फोकस नहीं है। मैं अपने आप को इधर उधर डी फोकस करना चाहता हूँ। मैं एक ही बिजनेस को कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ और एक ही पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ कि कहते हैं डोंट टच मी। इतना अपने आप को इस बिजनेस में मैं स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ कि अनटचेबल हूँ मैं, उस पर काम करो। बाकी देखो थोड़ा हमको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी साथ चाहिए, थोड़ा हमको इंटरनल भी काम करना पड़ेगा। सारा एक्सटर्नल का साथ आ जाए तो हम नहीं कर सकते, सारा इंटरनल का हमारा साथ है तो हम नहीं कर सकते। बट आई एम होपफुल कि हम नेक्स्ट विजन एक बार हम जैसे 3.5 मिलियन टन पर पहुंचेंगे तो वी कैन थ्रो आवर नेक्स्ट विजन। संजय जी, मेहनत सही है, इंटेंशन सही है और अपॉर्चुनिटी बड़ी है, तो पूरी कायनात हमारे साथ आके शायद वो मिशन को पहले ही पूरा करेगी। और देखो मेहनत अच्छी कर रहे हैं, नीयत हमारी बहुत अच्छी है, कैलाश भी साथ में। आप जब आप जैसे बड़े भाई लोग हमारे साथ है तो कैलाश भी साथ में आएगी। थैंक यू संजय जी। थैंक यू भरत भाई। Thank you. As there are no further questions, I would now like to hand the conference over to the management for closing comments. Thanks, MB team, for hosting us today for our earnings call. And I'd like to thank everyone who was present on this call on behalf of APL Apollo team for dropping by. And if there are any further questions, you could reach out to the investor relation team. Thank you so much. Thank you. On behalf of APL Capital Private Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us. You may now disconnect your lines.